Hello everyone, welcome to the official channel of Ossc Academy. So आज सीरीज होची आपनकर हिस्ट्री 30 MCQs of history और जेतरे आपनकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आसीबो जोडा आपनकर अपकमिंग एग्जाम्स जेमति आपण एएसओ हो एलटीआर हो पे बहुत हेल्पफुल हबो। आज सीरीज होची प्राय वन लाइनर क्वेश्चंस जोतरे आपनकर गोटे क्वेश्चन रो 4टा MCQ अछि बट विथ टाइम आपनकर जो जेमति ओएस पैटर्न और एएसओ पैटर्न रे आपनकर जेमति मल्टीपल ऑप्शंस क्वेश्चंस थाउची माने जेमति ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट सिंधी वाला क्वेश्चंस आसीबो। आज रो वन लाइनर क्वेश्चंस पुरा स्टार्ट करबा बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। So question 1 अच्छी the oldest surviving newspaper in India is। so ए ऑप्शंस भितरु से पचारला को न्यूज़पेपर टा सबुठु ओल्डेस्ट सर्वाइविंग न्यूज़पेपर। सर्वाइविंग न्यूज़पेपर मीनिंग होची सर्वाइविंग माने जोड़ा एबे भी कंटिन्यू अछि। आपण जदी ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर पचारला आ ओल्डेस्ट सर्वाइविंग न्यूज़पेपर पचारला त दुटा क्वेश्चन भितर डिफरेंस अछि। सर्वाइविंग न्यूज़पेपर इन द सेंस जोड़ा आपनकर कंटिन्यू बजे चलीछि तो आपनकर आंसर हबो बॉम्बे समाचार। आंसर हबो आपनकर बॉम्बे समाचार। तर अलगा ना भी एबे अछि मुंबई समाचार जेहेतु बॉम्बे रो ना चेंज हो जाइछि सो बॉम्बे समाचार और मुंबई समाचार केबे हेतिला ना इट वाज पब्लिश्ड फर्स्ट इन द ईयर 1822 तो आपनकर 1822 रे सेला पब्लिश हेतिला और जोड़ा आपनकर बोथ इंग्लिश एंड गुजराती तो बाइलिंगुअल पेपर टा जोड़ा आपन बोथ इंग्लिश और गुजराती रे पब्लिश हेतिला एंड जोड़ा एबे भी कंटिन्यू चलीछि जोड़ा एबे भी कंटिन्यू चलीछि। It is not only the oldest surviving newspaper in India, it is also the surviving newspaper in Asia. Okay? और जब आपण oldest newspaper पचारला कि first newspaper पचारला तो आपण जानथिबे सेरा होची आपनकर बंगाल गैजेट। फर्स्ट न्यूज़पेपर होची आपण बंगाल गैजेट जारो जे करथले आपनकर जेम्स ऑगस्ट हिकी। ओके जेम्स ऑगस्ट हिकी बुझा पड़ला। तो जब ओल्डेस्ट सर्वाइविंग न्यूज़पेपर पचारला आपण लिखिबे बॉम्बे समाचार और मुंबई समाचार। जदि आपनको जदि ओल्डेस्ट पेपर द फर्स्ट पेपर पचारला ताले आपण लिखिबे बंगाल गैजेट दैट इज डन बाय जेम्स ऑगस्ट हिकी। ओके नेक्स्ट मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 होची in the history of freedom movement of India the year 1930 is associated with। तो से देछि किछरा इवेंट्स देछि आपनकर जेमति पार्टीशन ऑफ बंगाल दांडी मार्च जलियांवाला बाग मैसेकर चौरी चौरा इंसिडेंट से पचारछि 1930 रे आपनकर को इंसिडेंट हेतिला। तो आमे जानछे दैट पार्टीशन ऑफ बंगाल आपनकर हेतिला इन द ईयर 1905। जलियांवाला बाग आपण जानथिबे बैसाखी डे रे हेतिला दैट इज 13th April 1919 by General Dyer। अपन चौरी चौरा हेतिला आपनकर 4th Feb 1922। ओके 1922 एंड आपनकर दांडी मार्च हेतिला जो आपन स्टार्ट हेतिला आपनकर 12th March 1930 एंड से एंड हेतिला 6th April 1930। ओके सो तो आपण दांडी मार्च जो 3 दिन पे हेतिला जोटा आपनकर बेंचमार्क ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो फ्रेमवर्क सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हेतिला जोटी महात्मा गांधी दांडी मार्च आपण कल्ला परे से सॉल्ट लॉ को ब्रेक कल्ला परे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करथिले एंड दैट वाज इन द ईयर 1930। सो करेक्ट ऑप्शन कोन हो आपनकर दांडी मार्च। करेक्ट ऑप्शन कोन हो आपनकर दांडी मार्च। ओके नेक्स्ट मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ आपनकर आजिकल रे एमसीक्यूज रे जो एग्जाम्स आछी इमती आपण ट्राइबल अपराइजिंग्स पेजेंट्स अपराइजिंग्स इमती क्वेश्चंस बहुत सारा आछी रिवोल्ट। तो एटा गोटे अलग रिवोल्ट वाला क्वेश्चन पचारची मॉपला रेबिलियन ऑफ 1921 टुक प्लेस इन। सो बेसिकली आपण मॉपला रेबिलियन कोडी हेतिला। सो मॉपला रेबिलियन आपण हेतिला केरला। तो मॉपला रेबिलियन आपण हेतिला केरला रो मलाबार एरिया रे। सो मोपला रिबिलियन हेतिला आपनकर केरला रो मलाबार एरिया रे जोठी आपनकर स्पेशली इट वाज बाय द मुस्लिम्स। सो मोपला रिबिलियन वाज कैरिड बाय द मुस्लिम्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड द लोकल हिंदू लैंडलॉर्ड। जो अपना लोकल हिंदू लैंडलॉर्ड थिले आपण जो ब्रिटिश रूल ब्रिटिश अनजस्टिस रूल जो अपन थिला
सेमानंग अगेंस्ट रे आपण मुस्लिम्स माने गुड रिबेलियन कैरी करथिले से रेबेलियन डा को होची मोपला रेबेलियन जोड़ा आपण मलाबार ऑफ केरला रे हितला इन द ईयर 1921 इन द ईयर 1921 ओके सो जदि पचारला मोपला रेबेलियन कोडी हितला सेरा होची मलाबार ऑफ केरला और के करथिला इट वाज by the Muslims against the British rule and also the local Hindu landlord. So these are against apna Mopla rebellion heitila in the year 1921. Okay, next. Moving to the fourth question. Fourth question, very bhala question ta. Which of the following colonies do not have settlement in the eastern coast of India? So basically जो बहुत सारा कॉलोनीज जो कॉलोनियल पावर्स आसले इंडिया को सेमानक भितरु जो डिफरेंट कॉलोनियल पावर गुडा अछंती जेंति फ्रेंच पोर्तुगीज ब्रिटिशर्स सेमानक भितरु को सेटलमेंट को कॉलोनियल पावर रो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रे सेटलमेंट नाही लाइक ईस्टर्न बॉर्डर रे आपनकर सेटलमेंट नाही से आपनकर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉलोनीज डू नॉट हैव सेटलमेंट इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया ओके So basically, आपनों क्वेश्चन डरे so question रे थिला which of the following colonies do not have settlement in the eastern coast of India. So eastern coast of India रो first देखिबा settlement अच्छी कोडी कोडी French तो French रो mostly आपन settlement थाए माने अच्छी पांडिचेरी रे आपन डच रो आपन सेटलमेंट अच्छी आपन कोची कोचिन ए एरिया गुडा आपण पोर्तुगीज रो आपण सेटलमेंट अछि मेनली आपण गोवा एंड आपण डानिश आपण सेटलमेंट एगुडा अछि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश एरिया रे सो बेसिकली क्वेश्चन रे पांडिचेरी फ्रेंच तो आपण जानचंदी सब जगह एरिया मोस्टली वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट दिरा जगह अछि इंक्लूडिंग आपण डच इवन पोर्तुगीज सो क्वेश्चन रे ट्रिकी क्वेश्चन डा आपण ईस्टर्न कोस्ट रे से तमिलनाडु पय एति पय मीन करछि बिकॉज़ तमिलनाडु आपण साउथ ईस्टर्न तमिलनाडु आपण साउथ ईस्टर्न सो से पर्टिकुलरली ईस्टर्न कहिछि सो ईस्टर्न पे आपण करेक्ट ऑप्शन हबो डैनिश ईस्टर्न पे आपण करेक्ट ऑप्शन कोन हबो डैनिश ओके नेक्स्ट मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन होछि फर्स्ट फोर्ट द ब्रिटिश कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया वाज सो ये जो बहुत सारा फोर्ट रा ऑप्शन देछि से भितर को फोर्ट ता आपण ब्रिटिश फर्स्ट कंस्ट्रक्ट करथिले से सेडा पचारछि तो आपनकर करेक्ट ऑप्शन हबो सेंट जॉर्ज फोर्ट आपन करेक्ट ऑप्शन हबो सेंट जॉर्ज फोर्ट तर अलगा ना होची व्हाइट टाउन the अलगा ना होची व्हाइट टाउन and it is was constructed in the year 1639 and एबेबी से फोर्ट ता आपन अछि जो आपनकर तमिलनाडु चेन्नई रे अछि तमिलनाडु चेन्नई रे जोडी आपनकर सेटा तमिलनाडु administrative purposes by एबेबी सेटा यूज होची so first British fort was constructed by India that is first fort constructed by the Britishers were St. George Fort also known as White Town in Chennai in the year 1639 okay next moving on to the next question 6 where was the right-way system introduced at first तो जानते बे तीनटा लैंड रेवेन्यू सिस्टम थिला अच्छी जोड़ा होची सॉरी थिला जोड़ा होची राइट वे सिस्टम महलवारी सिस्टम एंड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम सो राइट वे सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन अल्टरनेटिव टू द परमानेंट सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम तो परमानेंट सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो हेतिला तर अल्टरनेटिव वे आपनकर राइट वे सिस्टम इंट्रोड्यूस हेतिला एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ए भितर से देखला को प्रोविंसेस रे आपन राइट वे सिस्टम रे इंट्रोड्यूस हेतिला so it was introduced in the provinces of Madras and Bombay it was introduced in the provinces of Madras and Bombay and it was introduced by gote hale Thomas Munro and another one is apanagara Captain Alexander Reed so dita loko apanagara right way system introduced करथिले and that was introduced in the provinces of Madras and Bombay okay and it was a system that was introduced as an alternative to the permanent settlement system okay बुझा पड़ला next
Moving to the next question. Question number 7. Question number 7 hochi, who made the Deepavali declaration and when? So Deepavali declaration was made by a viceroy. Deepavali declaration e bitru kiye banaithile? Deepavali declaration was made or was declared by Lord Irwin. Lord Irwin in the year 1929. In the year 1929, and the declaration de se pledge or se declare karthile to provide dominion status, to provide dominion status, से इंडिया को dominion status provide करिया पई आपनगर declare करथिले in a declaration which is known as Irwin declaration or आपनगर Deepavali declaration, that is Deepavali declaration, and it was done by Lord Irwin in the year 1929. 1929. Okay, next, moving to the next question. Question number 8. Question number 8, गोटे भल question टा. What was the name of the newspaper published by the Indian Muslim League? So आपन बहुत सारा newspapers वाला questions अच्छी जो थोड़ा exam रे आसे. एटा गोटे अलग question टा. It is a newspaper that was published by Indian Muslim League. So Indian Muslim League बहुत सारा newspaper आपन publish करचंदी. But out of this 4 options, आपन correct option हबो option B, that is Inqilab. आपन correct option हबो option B, that is Inqilab. आउ जदि आगु मन रखिबे और भी मन रख परिबे तो बहुत सारा न्यूज़पेपर्स पब्लिश करचंदी. गोटेला कॉमरेड और हला आपनगर हमदर्द. हमदर्द. Okay, so these are the various newspapers that were published by the Indian Muslim League. Indian Muslim League. So A भितर correct option हबो आपनगर Inqilab. Correct option हबो आपनगर Inqilab. Okay, next, moving to the next question. Question number 9. So question number 9 होची आपनगर, the office of the Secretary of State for India was created by which of the following act? So आपन जो बहुत सारे act अच्छी in the Government of Indian Act 1852, 1909 Monte Milo reforms हो कि Monte Chelmsford 1919 Act हो कि 1858 Act हो, ए भितरु को act आपनगर office of the Secretary of State establish हेतिला. So office of the Secretary of State was established by the Government of India Act 1858. जोड़ा अपन क्वीन विक्टोरियास प्रोक्लेमेशन तापर आपनगर जो एक्ट पास हेतिला सेतिर आपनगर ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिएट करा हेतिला, जोथे से रिप्रेजेंटेटिव थिबे जे बोथ ब्रिटिश एंड इंडिया भितर आपनगर लिंक रहिबो जे सब डील करिया पे आपनगर सेक्रेटरी उड रहिबे. एंड द फर्स्ट सेक्रेटरी वाज लॉर्ड स्टैनली. एंड द फर्स्ट सेक्रेटरी वाज लॉर्ड स्टैनली. Okay, किसी factual data मन रख देवे that the office of the Secretary of State was created by the Government of India Act 1858 and it was done by Lord Stanley. Lord Stanley. Okay, next, moving to the 10th question. 10th question, which reformer from Maharashtra was known as Lokhita Wadi? So who among the following is known as Lokhita Wadi? So अपना करेक्ट ऑप्शन हबो गोपाल हरि देशमुख. अपना करेक्ट ऑप्शन हबो गोपाल हरि देशमुख. ओके, आउ जो ऑप्शंस अछि आपनगर जेमदि गोपाल कृष्ण गोखले, यू अपन जानथिबे पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी और फोररनर ऑफ महात्मा गांधी, एंड सी आपनगर सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी क्रिएट करथिले. सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी क्रिएट करथिले. सिमिलरली आपनगर एमजी रानाडे जे विडो रीमैरेज एसोसिएशन, विडो रीमैरेज एसोसिएशन, और आपनगर प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ पुण्य सार्वजनिक सभा, पुण्य सार्वजनिक सभा, एंड played an important role in the foundation of Deccan Educational Society. So these are the some of the organizations with which MG Ranade was linked. So एमाना भितरु अपना करेक्ट ऑप्शन हबो गोपाल हरि देशमुख को लोकिता बाड़ी कुआइतला, बट गोपाल कृष्ण गोखले मुझे एक्स्ट्रा डाटा दे देले जेमति सी द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, द पॉलिटिकल गोरी ऑफ महात्मा गांधी, एंड द सेम टाइम एमजी रानाडे जेमति अपना विडो रीमैरेज एसोसिएशन, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, पुण्य सार्वजनिक सभा एमरो बहुत सारा प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन से बहुत सारा कंट्रीब्यूशन देथिले. तो एडा हला अपना करेक्ट ऑप्शन.
Next question. Who was the Deoband scholar to have played a prominent role in the nationalist movement? तो जमती आपण बहुत सारा मूवमेंट पढ़ले जम देखिले आपण मोपला रिबेलियन हो आपणगर तो सेमती जो अपराइजिंग थिला सेमती गोटे आपण मूवमेंट हेतिला जोरा को डिओबांड मूवमेंट कहतला एंड डिओबांड मूवमेंट रो पर्पस थिला आपणगर इस्लामिक एजुकेशन को स्प्रेड करबा इस्लामिक टीचिंग स्पेशली आपण जो इस्लाम रो सुन्नी जो ग्रुप टा अछंती सेमानंगर टीचिंग्स को स्प्रेड करबा प्रोपागेट करबा पई आपणगर डिओबांड मूवमेंट हेतिला सो डिओबांड मूवमेंट जो हेतिला से भितर गोटे स्कॉलर म्हणजे स्कूल से स्कूल इंस्टीट्यूशन रो गोटे स्कॉलर जे आपण नेशनल मूवमेंट रे इंपोर्टेंट रोल प्ले करथला से पचारिछि सो आपण करेक्ट ऑप्शन हबो अबुल कलाम आजाद सो आपण करेक्ट ऑप्शन हबो अबुल कलाम आजाद सो अबुल कलाम आजाद डिओबांड स्कॉलर जे आपण इस्लामिक टीचिंग्स इस्लामिक थॉट्स इस्लामिक सुन्नी मानक जहाँ आपण टीचिंग ताको प्रोपागेट करिया रे बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करथिले okay and he also played a important role a vital role in the nationalist movement okay next question number 12 during whose period did the European soldiers stage the so called white mutiny in India so कहा टाइम रे आपणगर जो यूरोपियन सोल्जर्स थिले से माने व्हाइट म्यूटिनी आपणगर क्रिएट करथिले अच्छा आ गोटे डाटा थिला डिओबांड स्कॉलर रो जे एडा मूवमेंट टा केबे स्टार्ट हेतला डेट वन रखिबे इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1866 इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1866 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन Okay, next question. During whose period did the European soldiers stage the so-called White Mutiny in India? So, White Mutiny in India आपणगर हेथिला between the period 859 to 861. Okay, so a period रे आपणगर White Mutiny हेथिला by the European soldiers जो माने आपणगर यूरोपियन सोल्जर्स स्पेशली अपन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 परे जो यूरोपियन सोल्जर्स मानकर जो आपणकर भट्टारे रेड्यूस माने रिडक्शन हेतिला कि सेमानकर जो अथॉरिटी जो यूरोपियन लाइक ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कराइतिला ता अगेंस्ट रे से माने गोटे प्रोटेस्ट करथिले गोटे म्यूटिनी करथिले जोडा आपणकर व्हाइट म्यूटिनी कहउची and it was during the period of Lord Canning. It was during the period of Lord Canning. Okay, so correct option होगा हमारा Lord Canning. Correct option होगा हमारा Lord Canning. Next, question number 13. Who among the following was not the member of the cabinet mission which visited India in 1946? So cabinet mission plan हेथिला दोड़ा आपणगर constituent assembly रो framework माने कैबिनेट मिशन जो आस्तिला ताका मेन पर्पस थिला दैट वाज टू ट्रांसफर पावर आपण ब्रिटिशर्स मानगु इंडियंस मानगु जो पावर ट्रांसफर करा हबो दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान एंड कैबिनेट मिशन प्लान दा आपणगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फ्रेमवर्क माने तमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करिया पई गुड फ्रेमवर्क तयारी करथिले तो सेमान भितर जो मेंबर्स अछंती ए मान भितर के तांगर मेंबर्स नथिले सो करेक्ट ऑप्शन हबा आपणगर लॉर्ड माउंटबेटन अपन जानते हुए लॉर्ड माउंटबेटन वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड आल्सो लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया सो अपन लास्ट वाइसरॉय थिले ब्रिटिश इंडिया रो एंड सी ही थिले जो अपन पार्टीशन ऑफ इंडिया रो माउंटबेटन प्लान रे डिवाइस करथिले एंड सी आपनगर कैबिनेट मिशन रो गोटे मेंबर्स नथिले सो एमान भितर करेक्ट ऑप्शन होबा आपनगर लॉर्ड माउंटबेटन करेक्ट ऑप्शन होबा आपनगर लॉर्ड माउंटबेटन ओके नेक्स्ट question number 14 which was considered as Magna Carta of English education in India so Magna Carta of English education in India was done by ए भितर कहार अलगा ना that is Wood's dispatch on education 854 जा आपनगर चार्ल्स वुड कनार दिया हेतिला जे आपनगर मेंबर थिले बोर्ड ऑफ कंट्रोल तार गोटे से मेंबर थिले जे आपनगर
वुड्स डिस्पैच एंड एजुकेशन से माने वुड्स डिस्पैच एंड एजुकेशन क्रिएट करथिले दैट मेनली एम्फसाइज्ड ऑन प्राइमरी एजुकेशन और फीमेल एजुकेशन आपणकर इंडिया रे एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करिया पई बीट बी ऑन द प्राइमरी बेसिस और बीट रिलेटेड टू द फीमेल एजुकेशन फीमेल वाला एजुकेशन को नेकी जो बहुत सारा पॉइंट्स थिला वुड डिस्पैच पॉइंट्स थिला तांको से गोटे 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 कण वो डॉक्यूमेंट गोटे पब्लिश करथिले माने ये करथिले ताको को होछि आपनकर वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन एंड से अलगा ना कण मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 Question number 15 आपणकर who was the chairman of the first famine commission in 1880 so एमानक भितरु आपण फर्स्ट famine commission रो चेयरमैन किए थिले so first famine commission रो चेयरमैन थिले आपणकर सर रिचर्ड स्टार्चे so से गोटे famine commission क्रिएट करथिले जोथरा रूल थिला गोटे famine कोड जनरेट करथिले ओके जो थे फेमाइन कोड फेमाइन रिलेटेड जहाँ भी इश्यूज थिला ताको केमती टैकल करा जे से ताको नै गोटे कोड माने कोड करथिले सेम टाइम रे इरिगेशन फैसिलिटीज ऊपर बहुत इंपोर्टेंस देथिले केमती प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज मिलिबो एंड आपन लैंड रेवेन्यू आपन जो फेमाइन हुए से लैंड रेवेन्यू कलेक्शन आपन केमती ताको लैंड रेवेन्यू को स्टॉप करा हबो ड्यूरिंग द फेमाइन सिचुएशन रे अपन लैंड ओनर्स आपन रेवेन्यू कलेक्ट करिवेनी ताको नै कि अपन बहुत सारा एमती कोड डिसाइड हेतिला एंड दैट कमीशन फर्स्ट तांको मेंबर आपन चेयरमैन थिले सर रिचर्ड स्टार्चे एंड आउ दिरा कमीशन भी हेतिला सेकेंड कमीशन रो अपना चेयरमैन थिले जेबी लायल एंड थर्ड कमीशन रो अपना चेयरमैन थिले मैकडोनाल्ड ओके तो फर्स्ट थिले रिचर्ड स्टार्चे सेकेंड थिले जेबी लायल एंड थर्ड थिले आपनकर मैकडोनाल्ड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 so Calcutta Corporation Act 1899 which reduced the strength of elected members was passed by so एमान भितर को वाइसरॉय आपनकर Calcutta Corporation Act पास करथिले जे आपनकर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स को रिड्यूस करथिले so it was done by Lord Curzon so Lord Curzon आपनकर Calcutta Corporation Act पास करथिले to reduce the members of elected members स्ट्रेंथ को कमेबे कोडी ना कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रे एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स रो नंबर को बढ़ेबे मेंबर्स रो नंबर्स को बढ़ेबे पर्पस कोन थिला टू ब्रिंग ब्रिटिश सुप्रीमेसी तो ब्रिटिश मानकर जेमती मेजॉरिटी रहिबो टू स्ट्रेंथन ब्रिटिश मेजॉरिटी एंड टू रिड्यूस the involvement of Indians मान इन्वॉल्वमेंट को कमेबा आपण जो ब्रिटिशर्स मान स्ट्रेंथ मेजॉरिटी को बढ़ेबा तापय आपणकर से कम करथिले इलेक्टेड मेंबर्स रो स्ट्रेंथ को कमेथिले बाय द कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट एंड इट वाज पास्ड बाय लॉर्ड कर्जन ओके नेक्स्ट Question number 17. Congress had decided to start first civil disobedience. So अपना जो first civil disobedience movement हेतिला अपना ए भितरु कांग्रेस अपना कोठी स्टार्ट करथिला सेडा क्वेश्चन रे पचारची. So basically अपना first civil disobedience movement was started by Bardoli also known as Bardoli Satyagraha. Also known as popularly known as बरदौली सत्याग्रह आपन जानथिबे बरदौली सत्याग्रह रो आपनकर हेतला इन द ईयर 1928 एंड बरदौली सत्याग्रह रे आपनकर जो लीडर अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत इमेंस इंपोर्टेंट प्रोमिनेंट रोल प्ले करथिले इन
Bardoli Satyagraha movement. So the first civil disobedience that was started by Congress was at Bardoli, and it was done Bardoli Satyagraha, and in the year 1928 under the leadership of Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar Vallabhbhai Patel. Okay, next. Question 18. Who first voiced the idea of a separate Muslim state in India? Say Pacharchi, among the following leaders, who state or who proposed for a separate Muslim state? So, आपनगर two nations theory who idea को propagate करथिले से होचने आपनगर मोहम्मद इकबाल से कहते that Muslims and Hindus are two separate entities. से माने केबे भी गोटे जगह रे रही परिवेनी, माने गोटे प्लेस केबे गोटे माने केबे भी मिसी के रही परिवेनी. So the two nation theory जो idea formulate करथिले that was मोहम्मद इकबाल. So से आपनगर separate Muslim state who idea को first रे voice करिया पई से होचंदी आपनगर मोहम्मद इकबाल. That he is Muhammad Iqbal. Okay, so correct option होगा हमारा Muhammad Iqbal. Next, question number 19. Question number 19 होची आपनगर the first vernacular paper Samachar Darpan was published during the tenure of ये सब जगह वाइसरॉय अच्छी तो वाइसरॉय ने भितर समाचार दर्पण को वाइसरॉय अंडर रे येतिला. ओके, ठीक अच्छे. सो वाइसरॉय लॉर्ड हेस्टिंग्स, मिंटो, मॉल्ले एंड मेटलफ. तेरे में करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा लॉर्ड हेस्टिंग्स. सो लॉर्ड हेस्टिंग्स. सो दीटा क्वेश्चन अपन फेस कले. फर्स्ट वाज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग न्यूज़पेपर जो अपन थिला बॉम्बे समाचार. आ गुड थिला अपन द फर्स्ट इंग्लिश पेपर टू बी पब्लिश्ड न्यूज़पेपर होची अपन बंगाल गैजेट. एबे मासला द फर्स्ट वर्नाकुलर पेपर माने जो पेपर अपन लोकल लैंग्वेज माने रीजनल लैंग्वेज जो पेपर लिखा होची दैट इज कॉल्ड एज वर्नाकुलर पेपर. सो वर्नाकुलर पेपर जो अछि अपन समाचार दर्पण ताको किए पब्लिश करथिला का टेन्योर रे पब्लिश हेतिला दैट इज लॉर्ड हेस्टिंग्स and it was a Bengali paper and it was written in Bengali. जो अपन गोटे बाई वीकली पेपर थिला. Okay, so some of the first vernacular paper Samachar Darpan was published during the tenure of Lord Hastings. जो अपन गोटे बाई वीकली पेपर and it was written in the language Bengali. Okay, next. Next is question number 20. So question number 20 होची आपनकर the Red Cliff Committee was appointed. So basically the Red Cliff Committee आपनकर कौन पे अपॉइंट हितला एडा ऑप्शंस पूरा देखंतु आंसर डिस्कस करिया. Okay, so the Red Cliff Committee is also known as Boundary Commission. Okay, the Red Cliff Committee was also known as Boundary Commission. तांका मेन काम कौन थिला? तांका मेन काम थिला was to delimit the boundaries between India and Pakistan. So जो आपनकर पंजाब और बंगाल रे बॉर्डर to divide Punjab and Bengal between India and Pakistan. So आपनकर ताको लिमिट बाउंड्री सेट करिया पई आपन बाउंड्री कमिशन क्रिएट हितला जहार आपनकर मेंबर थे चेयरमैन थिले रेड क्लिफ. इपंदर अलगा ना होची रेड क्लिफ कमिटी and it was proposed in the Lord Mountbatten plan. जो आपनकर माउंटबेटन प्लान थिला. माउंटबेटन प्लान रे आपनकर गोटे बाउंड्री कमिशन क्रिएट हेतिला जो अपन रेड क्लिफ करथिले and he delimited the boundaries between India and Pakistan. जो अपन हेतिला August 17 1947. So August 17 1947 रे आपनकर India and Pakistan भितर जति बाउंड्री थिला ताको डिलिमिट करा हेतिला. So this is Red Cliff Committee or also known as Boundary Commission. Okay, next. Question number 21.
1. Okay, by the act of 1858 India was to be governed under whom? So से कहला 1858 जो आपण एक्ट थिला सेडा बे इंडिया का अंडर गवर्न करियो तो आपण जानथिबे क्वीन विक्टर्स प्रोक्लेमेशंस परे आपण 1858 एक्ट रे आपण कोन हबो जहां भी सब हबो इंडिया हैज टू बी गवर्नड इन द नेम ऑफ क्राउन इन द नेम ऑफ क्राउन तो क्राउन रा ना रे आपण इंडिया गवर्न हबो एंड एडा आपण से माने कोन ना देथिले गुड गवर्नेंस एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ओके तो गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया माने से कहथिले जे इंडिया रे गुड गुड गवर्नेंस आनिया पई इंडिया जहां भी एक्सेल रिवोल्यूशन हेतला आपण जहां भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हेतला आपण सेमानक परे सेमाने कहिले जे इंडिया गुड गवर्नेंस आनिया पई इंडिया हैज नाउ टू बी गवर्नड अंडर द क्राउन एंड गुड गवर्नेंस एक्ट जो अपन दे जानथिबे कि अपन गवर्नर जनरल को चेंज करेगी वाइसरॉय अपोजिशन ऑफ वाइसरॉय क्रिएट हेतला और जस्ट मैं कहली अपन ऑफिस ऑफ सेक्रेटरीट क्रिएट हेतला ऑफिस ऑफ सेक्रेटरीट क्रिएट हेतला बहुत सारा मिलिटरी चेंजेस और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी अना हेतला so this was act of 1858 this was the act of 1858 okay next question number 22 so which one of the following observation is not true about the quit India movement so quit India movement of 1942 जो आपनगर बॉम्बे रे हेतिला आपनगर in 8 August जो अपन अगस्त 1942 रे अपन हेतिला बॉम्बे रे ओके अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड सम प्रोमिनेंट लीडर्स भी बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करथिले सम प्रोमिनेंट लीडर्स भी अपन बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करथिले जेंति आपनगर जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायण अरुणा असफ अली okay these were some of the prominent leaders that played an important role in the quit India movement of 1942 so basically अपन quit India movement कब हेतला ना it was the outcome of failure of Cripps mission तो अपन जब Cripps mission fail हेतला okay the failure of Cripps mission परे अपन quit India movement launch हेतला in the year 1942 so basically it was not a non-violent movement it was a violent movement so movement बहुत ही violent movement थिला जो and mostly से माने कौन करथिले ना ब्रिटिश पावर्स को पैरालाइज करथिले माने पावर माने ई मूवमेंट एते ही इंपैक्टफुल थिला and it was under the leadership of Mahatma Gandhi it was a spontaneous movement बहुत ही spontaneously movement क्रिएट करा हितला and it did not attract भूल sorry it attracted the labor class so mostly अपन middle class लोक sorry लोक माने थिले जो माने ए मूवमेंट रे पार्टिसिपेट करथिले सो टू क्विट इंडिया मूवमेंट रो अपन भीतर करेक्ट ऑप्शन कोन हबो ना इट वाज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट नो इट वाज अ वायलेंट मूवमेंट जो थे बहुत लार्ज नंबर्स रे अपन पीजेंस अपन मिडिल क्लास लोक लेबर क्लास से आसिकी मूवमेंट रे पार्टिसिपेट करथिले एंड मु जेमति कहली इंपोर्टेंट लीडर्स राम मनोहर लोहिया जेपी नारायण एंड अपन अरुणा असफ अली so this was some details about quit India movement okay next question number 23 another important question and very important question who started the Bhudan movement तो Bhudan movement रो अलगा ना होची आपनगर bloodless movement और ग्राम दान गिफ्ट ऑफ लैंड बहुत सारा डिफरेंट ना रे ए मूवमेंट पॉपुलराइज थिला जेमति ब्लडलेस मूवमेंट हो ग्राम दान मूवमेंट हो गिफ्ट ऑफ लैंड सो बेसिकली भूदान मूवमेंट was started by आचार्य विनोबा भावे so आचार्य विनोबा भावे आपनगर भूदान मूवमेंट स्टार्ट करथिले एंड आचार्य विनोबा भावेर मोटो थिला दैट he propagated or requested
कि जो माने जो आपण रिच लैंडलॉर्ड थिले से माने जो हेल्पलेस और पुअर जो पीजेंट्स अछंती से लेबरर्स अछंती से मानन को वॉलंटरीली तांगर किछरा लैंड गिफ्ट एज गिफ्ट तांको प्रेजेंट करिवे तो से हम कहले गिफ्ट ऑफ लैंड मूवमेंट तो से गोटे बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करथिले ए मूवमेंट को कैरी फॉरवर्ड करिया पे एंड जो मूवमेंट रे एम थिला कि जस्ट टू रिक्वेस्ट जो लैंड ओनर्स थिले द रिच लैंड ओनर्स थिले किसी पोर्शन लैंड रो जो हेल्पलेस और जो पुअर लेबरर्स मैंने अच्छे से एज ए गिफ्ट प्रेजेंट करेंगे एंड ए रोल ए मूवमेंट पर महात्मा गांधी डिक्लेयर करते एज फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही बिकॉज से निज लेवल रे से मूवमेंट स्टार्ट करते एंड ही वाज denoted he was addressed as first individual सत्याग्रही तो जब पचारा नेक्स्ट क्वेश्चन के पचारा फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही किए तो फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही होचंदी आचार्य विनोबा भावे ओके नेक्स्ट okay so Mahatma was added before Gandhiji's name during which so ये सब जो different movements थिला ए different movements मान भितरु sorry गांधीजी का नेम आगरे महात्मा को मूवमेंट रे यूज हेतला so for playing an important role his important contributions in the चंपारण सत्याग्रह तो चंपारण सत्याग्रह जैसे important रोल आ कंट्रीब्यूट करथिले जहाँ भी से पाइवटल रोल प्ले करथिले एंड तांकर से सॉरी तांकर से वर्क तांकर से इंस्पिरेशंस ए सब को देखि रविंद्रनाथ टैगोर तांको गोटे टाइटल देथिले दैट वाज महात्मा so महात्मा and Mahatma was added before Gandhiji during Champaran Satyagraha okay and out भी हे परि आपनका बापू जदि पचारिबो बापू के देथिले that was by Subhash Chandra Bose okay so Gandhiji was addressed as Mahatma during the Champaran Satyagraha and the same time he was addressed म्हणजे बापू जदि हमके एड्रेस करथला पचारिबो ताले करेक्ट ऑप्शन अब आपनकर सुभाष चंद्र बोस ओके नेक्स्ट which of the following is not sorry correct about Arya Samaj so Arya Samaj अपन जानते हैं it was established founded in the year 1875 perhaps the date ta bhule chhe comment section mention kar debe it was established in the year 1875 by Swami Dayanand Saraswati जानते हैं आपण आर्य समाज फाउंड करते स्वामी दयानंद सरस्वती and this samaj played an this samaj contributed to the society in many different ways jemiti it was founded in the year 1875 correct achi its main motive was to promote faith in one god or monotheism apan jantibe idol worship को से माने idol worship को से माने oppose करेगी monotheism belief in one god faith in one god को promote करथिले and the same time it opposed child marriage widow remarriage को encourage करथिले and कौन आपनकर आपनकर जो फर्स्ट स्कूल जो DAV स्कूल दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो अपन लाहौर एस्टैब्लिश हेतिला से गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करथिले इन प्रमोटिंग नेशनल एजुकेशन तो नेशनल एजुकेशन प्रमोट करिया पई जो अपन वेस्टर्न एजुकेशन को अपोज करिकी नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करिया पई से DAV स्कूल्स भी ओपन करथिले सो ए सब भितर से पचारची व्हिच इज नॉट करेक्ट एटा तो करेक्ट सो नन ऑफ दिस सब ताले करेक्ट ऑप्शन हबो एटा नहीं करेक्ट ऑप्शन हबो नन ऑफ दिस ओके नेक्स्ट which of the following was the main objective of the extremists of the Indian National Congress तो अपन जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस दीटा ग्रुप थिला गोटे हला मॉडरेट्स आ गोटे हला आपन एक्सट्रीमिस्ट सो बेसिकली आपन मॉडरेट्स जो मान थिले दे फॉलोड ए नॉन वायलेंट पाथ दे से माने आपन प्रेयर
ए सब जिनस बिलीव करते कि से जहाँ जमती भी ब्रिटिशर्स मानक प्लीज मैं रिक्वेस्ट कले से आपणकर जहाँ भी माने जो गोल थे अचीव करेंगे। ऑन द अदर हैंड एक्सट्रीमिस्ट वर टोटली अपोजिट से नीड थिला दे वर लाइक कि निजर जहाँ भी माने कौन गोल को बहुत जल्दी अचीव करेंगे। एंड सेल्फ गवर्नमेंट नथिला ब्रिटिश नेगोशिएशन के भी नथिला नॉन वायलेंट नथिला कंप्लीट ऑटोनॉमी दे ऑलवेज वांटेड कंप्लीट ऑटोनॉमी तांगर मेन एम थिला कंप्लीट ऑटोनॉमी ओके। एंड नेगोशिएशन विथ ब्रिटिशर्स वाज बाय द मॉडरेट एंड नॉन वायलेंस नथिले दे वर वायलेंट एज कंपेयर टू द मॉडरेट एंड सेल्फ गवर्नमेंट सेमानकर मोटो नथिला सेमाने मोटो थिला कंप्लीट ऑटोनॉमी दे वांटेड freedom they wanted complete freedom from the britishers they wanted complete freedom from the britishers okay next the province where Indian National Congress did not form ministry after general election of 1937 so apna jo general election hitla 1937 re so apna out of 11 seats apna 8 seats congress won karthile so out of 11 seats 8 seats were won by congress and the majority congress majority karthile except 3 provinces bodhala apna bengal bodhala sindh और अपन पंजाब so तीन provinces छाड़ी out of 11 provinces except these three provinces congress has won majority seats in 8 provinces so correct option अपन कौन होगा बंगाल correct option कौन होगा अपन बंगाल okay बंगाल सीट पंजाब को छाड़ी अपन बाकी जहाँ भी 8 provinces थिला सेडरे अपन कांग्रेस सीट majority सीट जीतले। next which act did change the designation of Governor General of Bengal to Governor General of India so अपन correct option होगा Charter Act of 1833 Charter Act of 1833 थिला the Governor General of Bengal was now to be designated of Governor General of India and अपन कहि पारे first Governor General of India के थिले that is William Bentinck was the first Governor General of India and Charter Act of 1833 जो अलग ना हो ची अपना St. Helena Act okay so St. Helena Act or the Charter Act changed the designation of Governor General of Bengal to Governor General of India and the first Governor General of India was William Bentinck okay next last question second last who drafted the resolution of fundamental rights for the Karachi session of Congress in 1931 so fundamental rights जो अपना freedom of speech freedom of expression freedom to assemble ये सब जो अपना different fundamental rights थिला से resolutions को अपना compile करथिले कि draft करथिले that is पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेशन रे ना कराची सेशन रे एंड कराची सेशन रे अपन चेयरमैन के थिले इट वाज प्रेसिडेंट के थिले अपन सरदार वल्लभ भाई पटेल so Sardar Vallabhbhai Patel was the president of the Karachi session and he drafted fundamental right resolution के draft करथिला that is पंडित जवाहरलाल नेहरू okay next so last question of the session who was the president of the Indian Education Society of 1882 so Indian Education Society रो अपना president थे W Hunter जे हंटर कमीशन और अलग ना होची हंटर कमीशन जे आपनकर इंडिया रे एजुकेशन को प्रमोट करिया पई एजुकेशन को स्ट्रेंथन करिया पई बहुत सारा स्कीम्स एंड बहुत सारा स्कीम्स माने कोन लॉन्च करथिले एंड ही वाज W Hunter ओके
सो आमर ये सीरीज पर्पज होची एमती आपनको जहाँ भी आपण प्रैक्टिस सेशन आपण हबो आपण जहाँ भी डिटेल जहाँ भी आपण तो पढ़ी थिबे तर एमती मल्टीपल क्वेश्चंस आपण प्रैक्टिस करले आपनको सबु एरिया रो आपण क्वेश्चंस आसीबो जो आपण आग एग्जाम्स में आपण बहुत हेल्पफुल हबो सेमती आपनकर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब जाक सेशन माने माने बुक रो सॉरी सब्जेक्ट्स आपण क्वेश्चंस आसीबो तो आपण से क्वेश्चंस देखंतु सॉल्व करंतु प्रैक्टिस करंतु जदि आपण भल लागला आपण लाइक करंतु एंड शेयर और सब्सक्राइब करंतु थैंक यू फॉर टुडेस वीडियो।